So guys, finally the JUE Panniers are here, and it is a moment of truth right now because I ordered these two and the top box as well, but a message came from Panniers that the top box is not the same as is shown in the image there. तो top box तो मैंने cancel करवा दिया after a lot of fight. Yeah, but then I confirmed कि भाई जो Panniers हैं, I hope कि they are the same which जो दिख रहे हैं मुझे images में. उन्होंने बोला सर exactly वही है. पहले मुझे doubt आया, but then since I was getting them at a very cheap price, so I thought कि even if they are plastic and if they are good plastic, I would take them, you know. तो मैंने मंगा लिए and finally these two Panniers are here. Now I need to open up and see. पैनियर अगर 36 लीटर के हैं तो ये बॉक्स ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आई एम श्योर पैनियर आर ऑल्सो वेरी लाइट. दैट वाज वन रिक्वायरमेंट. ऑलराइट, पैनियर्स के कुछ स्टिकर्स हैं. ऑलराइट, हियर वी गो. दे लुक नाइस, गुड पैकिंग. हियर वी गो. वाओ, दे आर एक्सट्रीमली लाइट गाइस. दे आर वेरी लाइट. They are not plastic, actually they are fiber, and it looks like they are good quality fiber. I am impressed. It is so light. And yes, they were right, it is not a metal one, it is a fiber one. So I was just showing you this. Just look at it is all fiber, and if you actually देखो तो काफ़ी sturdy है. ये तो पूरा फाइबर पार्ट है, बट ये जो पार्ट है ये हार्ड प्लास्टिक के प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है. एंड इट लुक्स वेरी वेरी गुड, वेरी स्टर्डी एंड वेरी लाइट. ओ माय गॉड. एंड दिस इज़ द ब्रांडिंग. JUE का ब्रांडिंग है यहाँ. सो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट इज़ फ्रॉम द इनसाइड. दिस इज़ द लॉकिंग सिस्टम. आई थिंक यू रेज इट अप, डाउन करो, ऐसे लॉक हो जाता है. यहाँ पे चाबी जो है वो अंदर है. प्रेस भी नीचे से ये प्रेस किया, ऊपर उठाया, ये ऐसे बाहर निकला, एंड देन यू लिफ्ट इट अप. दिस थिंग आई रियली लाइक. अंदर उन्होंने इसमें ये कपड़ा दे रखा है जो अभी ये जो है वेलक्रो इसमें लगा नहीं है. आई हैव टू फिक्स दिस ओवर हियर. देयर इज अ क्यूट लिटिल पॉकेट. आई रियली लाइक इट. स्टडी है, इतनी आसानी से खुल नहीं रही है ये. सम पॉकेट है. देन देयर इज़ यहाँ पे भी इनको जो वेलक्रो है इनको यहाँ पे चिपकाना है. ये इसका ही निकल जाएगा और वेलक्रो लग जाएगा इसमें. वेलक्रो दिया हुआ है इसमें चिपक जाएगा. दोनों के दोनों पैनियर्स में एक ये JUE का ब्रांड है जो मैं बाहर चिपकाऊंगा इसमें. एंड देन देयर आर कीज़ एंड रियली नाइस. रिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है, दोनों में एक एक रिफ्लेक्टर भी है. जो मैं डर रहा था कि जो मैंने एक्चुअली काफ़ी चीप में मुझे मिल गया है ये पैनियर्स का सेट. आई थिंक नॉर्मली JUE का पैनियर्स का सेट जो है वो डेफिनेटली अब समवॉट लाइक 40,000 के आसपास आता है. मुझे ये दिवाली सेल में, पैनियर्स की दिवाली सेल में ये पड़ा है 22,000 ओनली. नाउ बिकॉज इट वॉज सो चीप आई वॉज वरीड अबाउट द क्वालिटी, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ दिस वन. आई एम रियली रियली एक्साइटेड रिसीविंग दिस. देयर इज वन मोर बॉक्स. लेकिन इनको अभी बाइक में कैसे लगेगा ये तो मैं देख रहा हूँ. बॉबिन्स तो इसमें हैं, ये पिंस वगैरह, बट क्या मेरे जो एग्जिस्टिंग हाइपर राइडर के सैडल स्टेज हैं उसमें वो लग जाएगा या फिर मुझे ये लगाने पड़ेंगे. आई एम श्योर कि ये कैसे ना कैसे फिट तो मैं कर ही दूंगा, बट उस बॉक्स में जो सामान आया उसको कैसे लगाना है, आई नीड टू फिगर दैट आउट. So I just switched to my helmet so that I can show you how the panniers are fitted on this bike. So this is how the bike looks with the panniers on. As you can see, quite sturdy. Already done a ride which you already saw, right to the Shillong, the Links waterfall. I had loaded them full to the brim with clothes. So now I'll just show you how to take them off. So as you guys can see, there are these locks. This one is the one which holds it with these stays,
So you just have to press from here. It comes out like this. It comes out like this, and then you just have to take it off these pins. This is how it just comes off. So now I'll just show you how I've managed to fit these stays on this. These are the bobbins on which you have to fix these grooves, as you see on these. So just match them up to them and just slide them down. First you take this L shape connector sort of thing and attach it below your grab rail here, similarly onto this side. Then there is this another L which you have a longer one down here, and similarly down here. And then there is this section is coming out on both the sides. So you attach this, first you attach this small strip over here, and then you attach and actually join these two long ones. You have to join, there are two strips here, so you join them using these screws. I hope you can see. So you join this and then you make a long rod and connect them, make them more sturdy. So then now, since you can place this, these are again slightly bent, as you can see. Depending on, there are a lot of grooves given, so you can join them depending on how much length you need. मैंने वो ट्राई नहीं किया इसको, मैं थोड़ा अगर आई शुड हैव मेड दिस वन लिटिल लॉन्गर तो मैं शायद सीधे यहीं ज्वाइन कर देता, बट देन आई यूज्ड, ये बस बचे हुए थे. इफ़ यू कैन सी इट इज़ नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, यहाँ पे खाली है, तो मैंने खाली इसको आपस में लगा के, सो दैट दिस रीचेस दिस प्लेस, इसको लगा दिया एंड देन इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है. इसको छोटा बड़ा करके आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं एज यू विश. सो इस तरफ ऐसा किया है. एंड दिस साइड अगेन एज यू कैन सी आई जॉइन दीज टू सेक्शंस. यहाँ पे डिस्टेंस कम था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये दिस एग्जॉस्ट का ये वाला कनेक्टर था, तो मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है. अदर साइड आई जॉइंड इट हियर, तो यहाँ मैंने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया है. So this is how this entire thing is set up. It is very very sturdy. अभी तक कोई issue नहीं आया है. So let's just put them back again once more. So you pick them again, pick them up, match करो to the bobbins and just slide them down, and then just this is how you attach these things. That's the entire thing. And yeah, I also got this thing, the bottle holder. It comes in handy. You don't have to carry a bottle in your luggage. Bike पे आ जाता है. So I think that is all, guys, about the Shaceway Panniers on KTM Adventure 390. If you have any questions, any queries, drop them down into the comment section. I hope you enjoyed this video. I will see you in my next vlog. Till then, this is Deepak, the Two Wheels Wanderer, signing off. Ride safe.